Welcome back, guys. Welcome back to Stock Explorer once again. So today is Sunday, a great day to study and learn few things. And today I was looking into a couple of things and studying a couple of stocks, but there was one quite interesting stock. So the stock name is Global Health. I'm going to share a few points about this stock. We also call this stock Medanta. So before we analyze this talk, I just wanted to talk about hospital sector, like few things we should keep in mind before we start analyzing any of the hospital sector, whichever you want to analyze. So the first thing is the success ratio. Like if the patient is going to a hospital, what is the amount of success ratio a hospital is delivering? Are they coming back fit and healthy? What is the mortality rate? If there's a large number of people passing away in the hospital because of wrong procedures or wrong medical procedures or lack of equipment, so you need to check all those things. Also affordability, is the hospital affordable? अगर आपकी पॉकेट के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है, then you have to go and look for other options as well. And also, one most important thing which you need to see is the amount of medical technology they are using, because everything is being advanced, and healthcare sector especially needs a lot of advanced equipments to be used when it comes to delivering great performance. So let's talk about this company health global health Medanta, which is one of the largest private multi-specialty hospital chain. So it deals in a lot of cities. Let's see where they are located. It's located in Gurugram, Lucknow, Patna, Indore, Ranchi, and there are multiple medical units available in Delhi and Lucknow as well. So they aren't hospital, but they are like hub and spoke model. I'll explain you about that later. Let's look into their detail as well. What is the bed capacity, because that's the number one thing which helps in analyzing like if the company is making money out of it or no. So as of quarter 2 of financial 24, Medanta had 2725 installed bed, and they're also planning to expand their installed beds to 3500 to 4000 by 2025, which is almost the double amount. So that's the bigger expansion they have planned in their capex cycle as well. The capital expenditure which they will be doing, it's planning on the increasing the beds. They have also received a floor area of 100,000 square meter in Gurgaon, and there's also another news which is recently coming, is Medanta is also coming in Delhi. So DLF and Medanta together as a joint venture, they are planning to develop a 400 beds hospital in Delhi, which will be run by Medanta, but the strategic investors will be DLF. So that's a great news for DLF too. It's going to be a big project, somewhere around 1200 1300 crores, and this is one thing which we should keep an eye on. And that's one of the reasons you should keep in mind while we will be studying the other business amounts as well, like why their expenditure are going. So this is one of the things you need to keep in mind. So ये ध्यान रखिएगा कि आप कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हो. ऑक्यूपाइड बेड डेज जो उनके रहते हैं, उसमें 1,32,000 बेड्स हैं जिसके अंदर वो ऑक्यूपाइड रहते हैं. ARPOB, which is average revenue per occupied bed, which is 61,000. हर बेड से उनको एटलीस्ट 60,000 के आसपास का रेवेन्यू मिलता है. ALOS, ALOS is basically average length of the stay of a patient. So एक पेशेंट अगर वहाँ एडमिट होता है तो ऑलमोस्ट 3.5 दिन के आसपास, 3.25 दिन के आसपास वहाँ रहता है, 3.19 days. और ये जितना कम होता है हॉस्पिटल के लिए उतना ही फायदेमंद होता है. पेशेंट के लिए तो होता ही है, हॉस्पिटल के लिए भी होता है. क्यों ऐसा कहते हैं? बिकॉज अगर एक पेशेंट किसी हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन रहेगा तो हॉस्पिटल की तो इनकम होएगी, उससे वो प्रॉफिट करेगा, क्योंकि किसी और को उसको देने की ज़रूरत नहीं, नए पेशेंट की ढूंढने की ज़रूरत नहीं. बट उसमें एक रिस्क होता है. अगर एक पेशेंट ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रहता है ना, तो वो उस एरिया में प्रोन हो जाता है मल्टीपल अदर हॉस्पिटल के थ्रू डिजीज होने के चक्कर में, और उस केस में उसका इम्यून सिस्टम वैसे ही डाउन होता है. एंड अगर उसको कोई भी डिजीज हॉस्पिटल के थ्रू हो जाती है ना, तो उसका डेथ होने की भी चांसेस ज़्यादा होती हैं हॉस्पिटल में. इसलिए एवरेज लेंथ ऑफ द स्टे जितना कम होगा हॉस्पिटल के लिए, उतना ही अच्छा एक पेशेंट के लिए भी है और एक हॉस्पिटल वालों के लिए भी है, विच इज़ फेयरली डिसेंट. 3.19
काफ़ी अच्छा है। पेशेंट फुटफॉल जो है 41,500 इन पेशेंट का फुटफॉल रहा है उनका, एंड 7,27,000 का ओपीडी में रहा है, जो ऑन बेसिस डेली बेसिस इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट एंड अदर स्टफ्स के लिए जो लोग आते जाते रहते हैं। रेवेन्यू का बाइफिकेशन देख लेते हैं। सो इन पेशेंट डिपार्टमेंट से 83%, मेजर चक तो उनका इन हाउस जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज जो इलाज कराते हैं वहाँ पे, उन्हीं से आता है। ओपीडी से उनका 17% ही रेवेन्यू आता है। मेन जो चीज जिस जगह से उनका पैसा आता है, इन सबसे इम्पोर्टेंट तो हार्ट इंस्टीट्यूट है। 23% जो इनकम आती है वो हार्ट इंस्टीट्यूट से आती है। न्यूरोसाइंस 11%, ऑर्थोपेडिक्स से 5%, किडनी से 8%, किडनी एंड न्यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट से, कैंसर इंस्टीट्यूट से 12%। कैंसर रिसेंटली इंडिया में इज ग्रोइंग इन अ बिग अमाउंट, एंड this is one of the major chunk which is bringing the amount of revenue. Digestive and hepatobiliary science से 12%, एंड लिवर ट्रांसप्लांट से 3% के आसपास आती है। capex, which is capital expenditure, the company spent around 1276 million, out of which 308 million were incurred in Noida hospital. So this is one of the thing which they haven't mentioned to any news channels or anywhere in the concalls as well. It's here. By the way, guys, where I'm reading all this from is from screener.in. I will attach the link of these places as well, so you can come back to the same place and you can read the notes too. So at least you learn through that too as well. Doctor driven management, pharmacy and home care services. So they have recently added this home care services in Delhi and Lucknow as well. So basically, if there's a patient which is in ICU and they are discharged from the hospital and they are treated in home, so they give in home facilities, like they send the nurses, they send all the equipments, and the patient wants to stay at home, तो उनका घर से भी इलाज होता है, but they charge a hefty fees for that. By the way, we were just studying and looking into it, like what is the average amount of fees which a hospital charge for any of the open heart surgery, a basic fees. It comes around 3 lakh, around 2.5 to 3 lakh, and Medanta cost structure showed that it's charge 2 to 2.5 lakh rupees in expenses for any of the basic 2 to 6 days open heart surgeries. So that is fairly decent compared to all the other hospitals as well. Coming back to Medanta, I wanted to show you more things as well. Let's take you to this site as well. So this is Mr. Naresh Trehan. He is the chairman and managing director of the hospital Medanta. He is one of the most reputed heart surgeon in India. He has received Padma Shri and he's also been awarded Padma Bhushan in 2001 as well. So top doctor for hearts in India is Mr. Naresh Trehan. He is managing the hospital from past 15 years, and his main focus right now, 15-18 years actually, and his main focus is to deliver the best of the best facilities in the hospital. 7 स्टार फैसिलिटी देते हैं बेसिकली, अब ये समझ लीजिए, ये हॉस्पिटलों का 7 स्टार होटल है. आई रियली विश, लाइक, खुदा ना खास्ता किसी को भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े, बट if you ever happen to go to see Medanta, you will be like awestruck and amazed. The level of hospitality and the kindness and the care they give, it's मतलब प्योरली आपको कंपैशन दिखाएगा लोगों का आपके प्रति. आप वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचेंगे, आपके लिए जो गार्ड दरवाज़ा भी खोलेंगे, द मोमेंट यू गो टू द डेस्क एंड आस्क अबाउट द पेशेंट, द वे दे ग्रीट, द वे दे गाइड यू, हेल्प यू थ्रू द लिफ्ट, भाई स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं, यही इसी की वजह से etiquettes and courtesy आपको दिखेगी हॉस्पिटल के अंदर. The level of food they give as well. I have personally been to Medanta because, and other things I would like to share about Medanta once again. So this is the Gurgaon hospital, which is around 1400 beds capacity of hospital. This is one of the largest private hospital in India with the most amount of beds. So one of the most reputed hospital. 1440 doctors are there in Vedanta total, and 5320 nurses are there. This is a big cost structure for Medanta because there's a big iteration rate in the hospital as well. What is iteration rate? Iteration rate is basically new people are coming in and they are leaving uh, the company soon, and that costs a big disadvantage for the company because they hire you, they train you, and by the time you get trained and you start
showing your potential and delivering it, you are resigning and going. So they need to hire new people, train them again. So there's a time cost and a monetary cost which is being affected as well. Medanta National Network. So let's see. This one is Medanta Specialty Hospital in Indore, which is installed with 175 beds and 53 ICU beds. Medanta Lucknow has 475 installed bed with 130 ICU beds. Jayaprabha in Patna has 330 installed bed with 57 ICU beds. In Ranchi also they have 200 installed beds and 54 ICU beds. Which the one which is under construction in Noida has 550 beds, and the one which I showed you initially, the Gurgaon one, this one has 1400 beds. So this one has the largest bed capacity in India, a private hospital. One more news which came out recently is that in Lucknow and Patna and in Indore, they are planning to increase all the bed capacity by 50 and 75 beds by coming year. So we will be seeing a big amount of beds coming in soon. They have also got this hub and spoke model. So this is a kind of business model where basically Medanta has small other spokes. Like if you have seen in Dr. Path lab, छोटे छोटे उनके laboratories, Dr. Bakchis भी जैसे उन pathologies हैं उनके वहाँ पे आसपास. So they collect the sample and then they send it to the main branch. They also have the facility to admit you. Not a large number of beds, but they have a small number. So basically a hub and spoke model. So main hospital आपको मेदांता है, and suppose there is a smaller hospital which is linked with Medanta in Kanpur. This hospital is in Lucknow, let's say, and this hospital is 80 kilometers away in Kanpur. So they can get you treated here with the facilities of Medanta main from Lucknow. So the doctors from there in Lucknow can virtually monitor you and check your all the blood results and your ECGs and your heart rate and your continuous monitoring of the MRIs. Can do it from here and you can get treated there. There are a couple of advantages with that. First, you don't have to travel first to come all the way here. It saves you your cost too, and also helps in for the doctors to deliver the same thing without traveling too. So I'll show you how they do it. Like you can see it right here. Doctors virtually use those screens and monitor you on the daily basis with nurses as well, and they examine your reports too. So this is one of the example they are showing how EICU is working in Medanta. So this is one of the other cost moving advantage for Medanta as well. They also provide air support and other facilities. Suppose there's a, because these deal in high elite class clientele as well. So for sure, if you need any kind of air facilities, they provide that too. Inner workings of Medanta. So basically, how do you go about it? You have to admit yourself in ICU from emergency OPD ward, and then daily patient rounds happen too with audiovisual channel. So basically, uh, the command center will also do it. The command center will also do it, and the people who are working in that hospital will also do it. So there's two visually people coming and checking you as well. One click emergency button. So if you need any kind of emergency, you can just click once and then you can get the support as well. Apart from that, 24/7 patient care and kind of care will continue to patient in ICU. Pretty uh, basic, which you can see here. So these were the things which I saw it in the other stuff in the company's PDF con call meeting. One more thing which I noticed, the company posted this that they were the top hospital in the world as well. So I just checked like world's best hospital list in 2024, and Medanta actually listed on number two. It's actually on number two among the top hospital in the world, guys. AIMS is number one in Delhi, and number two is Medanta. So I think this is among India, and in India it's number two. But it's all there. Its name also comes in. इसका नाम वर्ल्ड लेवल पे भी आता है. उसके अलावा अब हम चलते हैं मेदांता के चार्ट में. ये सब तो हो गए उसकी फंडामेंटली कि कंपनी करती क्या है एंड हाउ टू गो अबाउट. Now let's go and see what does the chart say, because the price doesn't show what the company is showing on the internet. So what it shows right here is the market cap is 25,971 crore. The current price is 967. The high is of 1514. तो हाई से अभी नीचे आ गया है, काफी नीचे आ गया है. Now let's see
द स्टॉक पीई। पीवी जो उसका पी जो था अभी तक मीडियन पी 62.6 का था, जो अभी आ गया है 53 पे, विच इज वे बिलो देयर मीडियन पी। अभी यही स्टॉक अभी जून जुलाई के आसपास 85 के पी में था। अभी ये आपको पी 53 पे मिल रहा है, विच इज अ गुड प्लेस टू look into the stock. Company has recently reduced its debt as well. I'll show you where it shows. So the company's market cap is 25,971. Decent market cap compared to all the big daddies out there. 97,000 crore Apollo, Max is 90,000, and Fortis is 43,000. Compared to all these, I was also checking like what is the average bed rate which these hospitals charge. So I just wanted to quickly compare like how much difference is there for the bed charges. So I was checking Apollo charges 51,202 in 23. In 24 the increased to 56,000. Aster DM charge around 39,300 per day on an average, 39,000. Fortis charge 59,870, and Max is the highest one who charged 74,500. And our stock out here charges around 61,000, which I showed you, 61,000 average, which is decent compared to all the other players. It's the second number after Max who charges the most. And I think this it is at a saturation level. इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। 61,000 रुपीज़ पर डे यू आर चार्जिंग फॉर अ बेड, उससे ज़्यादा आप क्या चार्ज करेंगे? फिर तो पेशेंट वहीं अपनी जान दे देगा, इतना ज़्यादा चार्ज करेंगे तो एक लेवल भी होता है चार्ज करने का, क्योंकि बाकी तो सारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ सेम लेवल की ही जा रही है ना। सो यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एंड द फैसिलिटी जिसका आप चार्ज ले रहे हो। सो देयर इज अ सर्टेन लिमिट, उसके ऊपर आप नहीं ले सकते। दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर द कंपनी आउट हियर दैट दे आर चार्जिंग प्रीटी डिसेंट। लेट्स गो टू सी देयर आरओसी। 19 का आरओसी है, विच इज ऑल्सो रियली गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 19। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए आप, अगर अपोलो का 0.77 है एंड हमारा है 0, ग्लोबल हेल्थ का है 0.28, which is high compared to all the other players, but the company is focusing on paying off the debt as well. What is debt to equity ratio भाई? अब इसके लिए भी मैंने को प्लान किया सबके जितने भी टर्मिनोलॉजी है सबके बारे में डिटेल में बताने का, बट अभी क्विकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेट टू इक्विटी इज बेसिकली कंपनी ने कितनी उधारी ले रखी है एंड उसके पास कितना पैसा है। तो जितनी उधारी ले रखी है उसके पास इक्विटी का जितनी वैल्यू है अभी, उधारी डिवाइडेड बाय इक्विटी कम हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए जिनका कम है उसकी उधारी उतनी कम है। तो जिसका भी 1 से आसपास होता है या 1 से ज़्यादा होता है, इट्स टू मच। तो 1 के भी जितनी पास है वो भी ज़्यादा है। तो अपोलो हॉस्पिटल का इस केस में काफ़ी उधारी है। तो सबसे कम उधारी अभी है नारायण, नहीं, पॉली मेडिक्योर की है। बट नथिंग टू वरी अबाउट, हम लोग उन स्टॉक को नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। सेल्स देखते हैं इसकी अब। 861 करोड़ की सेल रही जून में। एक्सपेंसेस रहे 675 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा 186 का। एंड ओवरऑल नेट प्रॉफिट रहा पर क्वार्टर में 106 करोड़ का, विच इज गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर हॉस्पिटल सेक्टर, एंड दे आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ऑन 15% बेसिस ईयर ऑन ईयर, विच इज अमेजिंग। फुटफॉल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो भाई डॉक्टर लोग के पास पेशेंट जा रहे हैं एंड द मोर अमाउंट ऑफ पीपल आर बीइंग अवेयर अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए, वो जा ही रहे हैं। और इंटरनेशनल क्राउड जो आ रहा है इन हॉस्पिटलों में चेक कराने का, उसका भी नंबर बहुत हाई है। द अमाउंट ऑफ पीपल कमिंग फॉर दिस हॉस्पिटल इज अराउंड 40,000 पीपल। जितने भी आप एम्बेसी के लोग देखते हैं या फिर फॉरेनर्स जितने भी देखते हैं जो बाहर से आते हैं, दे गेट कंसल्टेड हेयर एज वेल। और जितने भी एमएनसीज में आप काम करते हैं एंड इफ यू आर वर्किंग इन इंडिया, कोई आलतू फालतू हॉस्पिटल में तो आपका होता नहीं है इंश्योरेंस। इफ समथिंग हैपेंस यू गो टू दीज हॉस्पिटल ओनली एंड देन दे टेक केयर ऑफ यू। तो ये सब चीज़ें तो है ही। सेल्स देखिए आप, 3,350 की रही इस साल के अभी जो एस्टिमेटेड है, एंड एक्सपेंसेस अभी सो फार हैज बीन 2,556। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज 482 crores का प्रॉफिट दिस ईयर एज वेल एज ऑफ नाउ। बट व्हाट इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी विच दे आर यूजिंग इन? सो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको मैं दिखा देता हूँ। प्रमोटर्स के पास 33% है, एफ आई आर के पास 12% है, विच इज नाउ 45% टोटल, एंड 10% डी आई के पास। तो 55% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। बाकी 43% जो शेयर होल्डिंग है वो है पब्लिक में। उसमें से भी
काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास ही मेजर चंक है। 14% मॉरिशियस का एक फंड है डन ऑन इन्वेस्टमेंट्स, उनके पास है। 11% सुनील सचदेवा जी के पास है। आरजे कॉप के पास भी है 6.59। सो ज़्यादा शेयर्स है नहीं पब्लिक में फ्लोटिंग। सो ये काफ़ी सही चीज़ है बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दीज स्टॉक्स एज वेल। बॉम्बे में इनका एक प्लांट आने वाला है विच इज कमिंग सून, which I saw in one of the places. Let me show you. Perfect. As you can see here, Global Health operator of Medanta Hospital is set to build a 500-bed super specialty hospital in Mumbai with an investment of 1200 crore. एक नोएडा में बन ही रहा है, दिल्ली में डीएलएफ के साथ आने वाला है, एंड मेदांता मुंबई में भी आने वाला है। विल बी कंप्लीटेड इन 3 to 4 years. सो इस सब चीज़ों के लिए कंपनी ने एक्सपेंसेस निकाले हैं। एज यू कैन सी कहाँ पे एक्सपेंसेस किए हैं उन्होंने। cash from investing activity, fixed asset purchased पॉइंट -27 करोड़, ये लास्ट ईयर मार्च में इन्होंने दिए हैं। ये दिए हैं आपके बॉम्बे दिल्ली वाले जो आर आई डी एल एफ में उसके लिए। फिक्स्ड असेट परचेज, हर साल देखिए आप केपेक्स के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ पैसा खर्चा किया है। और जो भी आप ये सोच रहे हैं ना इक्विपमेंट्स, ये सस्ते नहीं आते हैं। अपार्ट जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, दे आर फॉर करोड़ एंड लैक्स एक एक इक्विपमेंट। And this is the also only hospital where they have an exclusive MRI machine in the operation theater, so they can like continuously track and monitor if there's any tumor still left. So this is the only hospital who has that MRI, continuous MRI monitoring while operating a patient. Usually आपको MRI पेशेंट का कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, आई मीन ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू के बाहर जाके एक स्पेशल उसमें रूम में जाके कराते हैं, कोई भी हॉस्पिटल में भी। बट इसमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही है, सो यू कैन कंटिन्यूसली मॉनिटर। तो ये भी एक इनका एडवांटेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो भी इनका माइनस में रहा है, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज माइनस में रहा है क्योंकि इन्होंने अपना डेट रीपे किया है। आप ये देख सकते हैं रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स 584 करोड़ का इन्होंने डेट पे किया, विच इज गुड थिंग। कंपनी इज पेइंग ऑफ देयर डेट एंड फोकसिंग ऑन देयर बिजनेस। सो एवरीथिंग लुक्स गुड फॉर द कंपनी। सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ओनली इन द चार्ट आई कैन सी दैट द टॉप इज फॉर 1529। हम अभी आ चुका है अपने सॉलिड बेस पे विच इज 940 के आसपास। करंटली इट्स ट्रेडिंग एट 967। बट यहाँ से अगर आप देखें 940 एरिया के पास, ये 30-40 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहीं पे आपको जो भी करना है इसी एरिया में करना है। यू नीड टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग हेयर इन दिस एरिया। अभी यहाँ से आएगा और यहाँ से थोड़ा सा बेस लेके वापस जंप करेगा, बिकॉज यही एक सॉलिड बाइंग जोन दिख रहा है स्टॉक का। एंड देन इट विल गो बैक अगेन टू 1500। एंड जितना भी आप ये डाउनफॉल देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द निफ्टी फॉल अगेन, फंडामेंटली कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं आई है कि कंपनी में कोई खराबी हो। प्लस अभी इकलौती जो गुड न्यूज़ यही आई है कि कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू बाय द वन विच आई एम टेलिंग यू इन मुंबई। सो मुंबई में भी वो लोग अपना लैंड ले रहे हैं। देखिए, ग्लोबल हेल्थ विंस टेंडर फॉर लैंड पार्सल टू बिल्ड न्यू हॉस्पिटल इन मुंबई इंडिया। दैट इज ऑल्सो इन द न्यूज रिसेंटली ऑन 1 October, विच विल बी अ मूवर एडवांटेज है। अब ये देखिएगा कि अब मंडे को स्टॉक मूव करेगा। सो दिस इज क्विक एनालिसिस फ्रॉम माय एंड एंड यू कैन लुक इनटू दिस स्टॉक. This is not a buy sell recommendation. Let me know how was the analysis, and thank you once again guys for watching my video. Thank you.